Good evening, everyone. So आज हम cover करेंगे Economic Survey of Punjab, the Economic Survey for the year 2020 to 2021. So firstly, a very important point: who prepares the Economic Survey? So in Punjab, the Department of Economic and Statistical Organization prepares the Economic Survey, and this organization prepares, and the Economic Survey is presented in the Legislative Assembly each year. And now let's move forward and look at the various aspects of economic survey. So the economic survey will be covering it chapter wise in a series. Basically, we'll have 8 different video lectures, and each lecture will cover each chapter separately. We'll try to cover it in detail for the important points, what are the different types of questions that can be asked, and mainly the factual content that needs to be remembered from the economic survey. So economic survey, the first chapter is macroeconomic overview. So basically a broad overview of the entire economic survey. It will talk about agriculture, the labor force, industry, services, the per capita income. सब कुछ छोटा छोटा overview के form में first chapter में given है. So the economy in Punjab, the Punjab's GSTP, gross state domestic product, grew at an average rate of 5.75% between 2015 and 16 to 2019-20. So over a 5-year period, 4-year period basically, 15 से लेके 19 वाले तक, it has grown at an average rate of 5.75%. Not exactly an important value, but still पता होना चाहिए कि growth rate around 6% रहा है. Economic growth in Punjab has declined in the year 2019 and 20 in line with the national trends. National trend भी यही कहता है कि economic growth has declined और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है. And Punjab's economy is expected to contract in the year 2020 to 2021. Obviously, there was a pandemic, तो हर जगह contraction हुआ है economy का. So that is expected in the Punjab economy as well. Since 2013 and 14, growth rate in Punjab was slower than the national average, but 2020 to 2021 में एक shift आया है इस trend में. Now the trend is shifting. So there is a contraction of Punjab GSTP. It is basically 1.3% less than compared to the all India level. So the contraction is actually less than all India in Punjab. So looking at the sectoral growth rate, हमारा share of each sector and employment in each sector in Punjab's GSVA, तो the real growth rate हम real पे focus करेंगे mostly. So this table is also picked up from the economic survey as well. Agriculture and allied sector, जो हमारा खेती का सेक्टर है, बेसिकली एग्रीकल्चर का सेक्टर है, तो पंजाब में ये सेक्टर वैसे ही बहुत अच्छा है. तो इसका ग्रोथ रेट in 19 to 20 it has been 1.8%. In industry, it is 1.1%. And in services, the growth rate is always phenomenal. It is very good at 5.6%. The share in employment is for agriculture, it is 24.6%. For industry, it is 35.4%. And for services, it is nearly 40%. So basically in Punjab, 40% of the people are employed in services, 24.6% people are employed in agriculture and allied activities, and 35.4% people are employed in the industry sector. I want you to comment what is the share in employment for each of these sectors for India. So please mention that in comments. Let's see who knows that. So firstly, moving to agriculture in Punjab. Agriculture is basically the backbone of Punjab, और इसीलिए पंजाब को India's granary भी कहा जाता है. It contributes 12.8% to the country's rice production and 18.2% of the wheat production. तो इंडिया में जितना भी राइस प्रोड्यूस होता है उसका 12.8% अकेला पंजाब प्रोड्यूस करता है, एंड जितना भी व्हीट प्रोड्यूस होता है उसका 18.2% पंजाब प्रोड्यूस करता है. Punjab's percentage share in country's area under cultivation is 7% and 12%. That means 7% of the area of the total area under wheat cultivation
of rice cultivation. Basically, firstly, we have to see rice is under in Punjab, and 12% of the area for wheat cultivation is in Punjab again. Then, as different states contribute to central pool for basically public distribution system, so Punjab's share in central pool of rice and wheat has been very significant. Punjab ka total area is nearly 1.53% in geographical area of India. An important point, please do not forget this. It is very important from Punjab GK point of view also. In 19 to 20, the share of rice and wheat in central pool was 20.92% and 37.82%. So basically, central pool में rice 20%, almost 21% पंजाब से आ रहा है, और 37, nearly 38% wheat जो है वो पंजाब से आ रहा है. In Punjab, a 28.68% share in GSVA translates to more than a proportion into a proportionate share of 24.6% in employment. I want you to comment कि इंडिया में यही शेयर फॉर एम्प्लॉयमेंट कितना है एंड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसपीए में, जीवीए में फॉर इंडिया. वैसे ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ गिवन भी हैं, बट लेट्स सी इफ यू कमेंटेड बिफोर वी हैव सीन. सो इन पंजाब द एग्रीकल्चर has an employment of 24.6%, which translates to a GSVA of a GVA of 28.68%, and the industry has an employment share of 35.4%, and it contributes 24.11%. Services has an employment share of 40%, and it contributes nearly 47.18%. So this is a much more appropriate, I would say, distribution कि जितना वो employ कर रहा है लोगों को, somewhat उतना ही वो contribute भी कर रहा है GVA में. Looking at India, this percentage is very skewed. Agriculture and allied activities employ करते हैं nearly 42.5%. Agriculture में किस तरह की unemployment होती है, I would like you to comment. Then we have share in GVA. Agriculture में जो 42.5% है, nearly one half of the population. अगर हम 50 देखें तो 42.5% of the population is contributing only 18.38%. Whereas the industry, it is 25%, employing 25% of people of India and contributing 26.66%. So nearly proportionate. In services, this proportion is again skewed. 32.4% people are employed in services, and it has a share in GV of 54.96, nearly 55%. Then we look at real growth rate. So the real growth rate in agriculture, इसमें आपको ट्रेंड पता होना चाहिए मोस्टली, या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर किसका है वो पता होना चाहिए. सो एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली क्रॉप्स में इतना ग्रोथ नहीं हो सकता पंजाब में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो स्टैग्नेशन पे है एक तरीके से. इसीलिए हमें कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करनी है. इसीलिए हमें कहा जाता है कि डिफरेंट अलाइड एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, और उन अलाइड एक्टिविटीज में से सबसे प्रोमिनेंट निकल के आती है लाइव स्टॉक एंड फिशिंग. इट इज वेरी स्ट्रेंज कि पंजाब जहां पे कोई भी आसपास सी नहीं लग रही, ओशन नहीं लग रही, वहां पे भी वी हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 12.3% in fishing and 6.5% for livestock. Livestock is an important component anyhow in Punjab agriculture. Industry in Punjab. So we're basically covering only the overviews of different sectors as per the macroeconomic. आगे चल के हर चैप्टर हर सेक्टर को डिटेल में कवर करता है. We'll look at that in the subsequent lectures. Industry in Punjab in 2018 and 19, the gross capital formation was 14.1% of the GSDP. I want you to check and let me know कि इंडिया में gross capital formation कितना है और what is considered a good percentage. I would like you to check that also कि कितना होना चाहिए. Punjab is the leading producer of apparels, woolen knitwear and sports goods. Ludhiana has emerged as largest manufacturing cluster in North India. As we know, it has a lot of manufacturing industries, and further light engineering, such as production of bicycles and auto parts.
is an important industry in Punjab. Bicycles के लिए कौन सा district या कौन सा region famous है? Please comment. Let's see. Next we have real growth rate. So for industry, so जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा था कि लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है. सो लुकिंग एट इंडस्ट्रीज, सो इंडस्ट्रीज में माइनिंग एंड क्वारिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है. सो नियरली 17.8%, नॉट गोइंग टू द एवरेज बट 2019 के एस्टिमेट्स के आसपास. ठीक है. एंड Then we have electricity, gas, water supply. इसमें भी 4% है, but more or less agriculture is very important. And यहाँ पे mining and electricity are areas of good growth rate. Next we have services sector. ऐसे services is the fastest growing sector. सबसे ज़्यादा grow कर रहा है, be it at India level or be it at state level. The sector has consistently contributed a share of over 46% of the state GBA and witnessed a growth over 7%, which is a good growth rate over a 6-year period. So contribution important है, growth rate over 5-6 years पूछे जाने का chance कम होता है in exams. Again, looking at state-wise statistics for real growth rate, so बहुत अच्छे growth rate किसमें है? Other services तो नहीं कह सकते, वो 8% है तो other तो वो नहीं पूछेंगे. Public administration has a very good rate, 7.7%. Then we have services में overall 5.6% है. Again, financial services has 5.1%, but the prominent point is that public administration has 7.7%, one of the highest in this category. Next is income in Punjab. Punjab में कितनी आमदनी है? Punjab estimates a per capita income of 1,61,083 rupees. This is per annum in 2019 to 2020, and it has increased. In comparison to India, India has a per capita income, average per capita income of 1,34,186 rupees. और पंजाब में क्या स्टैटिस्टिक्स है? रूपनगर, एसएस नगर एंड लुधियाना आर द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम, एंड गुरदासपुर एंड तरन आर डिस्ट्रिक्ट्स विद लोएस्ट पर कैपिटा इनकम. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स, ये चीज याद रखना, हाईएस्ट लोएस्ट वैसे इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड आल्सो लाइक यू टू नो, टेल मी इन कमेंट्स कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है लेटेस्ट पंजाब का और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकला है. Which district has it been carved out from? And you can make a list of all the answers and comment it in one comment. So according to NABARD, which gives us the All India Rural Financial Inclusion Survey of 2016 and 17, में इसने कहा था, among all the states, agricultural household in Punjab reported the highest average monthly income of 23,133 rupees. Haryana में second highest थी with 18,946 rupees. So quite a lot of gap for per month, almost 5,000 rupees. Next we have inflation. Inflation में RBI टारगेट तो है ही है हमारा 4+- 2%, तो 2% to 6% का तो हमारा टारगेट है ही है. Then we have urban inflation. Urban inflation in Punjab exceeds the rural inflation in 2020, but rural inflation has been overtaking urban inflation earlier. पहले रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा होती थी, अब अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है. एंड देयर आर सर्टेन ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन रूरल एंड अर्बन पंजाब. सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो फूड एंड बेवरेजेस रूरल एरिया में सबसे ज्यादा है. ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट ईयर्स बताए हुए हैं. जो अंदर वाला है वो 2019 का है और बाहर वाला 2020-21 का है. अगेन यहाँ पे we have food and beverages. This is food and beverages का component. ठीक है. Then we have pan, tobacco, ये बहुत कम है. ये miscellaneous है. यहाँ पे भी ये miscellaneous है. Food and beverages है. So also comment कि हम inflation कौन से index से check करते हैं in the comments. Next we have the public distribution system. The Atta Dal scheme being run by the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Punjab was brought under the ambit of National Food Security Act 2013 and it was renamed as Smart Ration Card Scheme.
in the year 2017. Beneficiaries of this scheme ₹2 per kg as per their entitlement in 30 kg bags मिलता है इनको. प्रायोरिटी हाउसहोल्ड बेनिफिशियरीज को 5 kg वीट पर मंथ मिलता है, और जो अन्न अंत्योदय योजना के बेनिफिशियरीज हैं उनको 35 kg वीट पर मंथ मिलता है. इसमें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है. अगर आपको कोई किसी तरीके का ग्रीवियंस है, कोई इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए 3-tier grievance redressal mechanism established किया गया है through internal, external and state food commission for the redressal of the grievances. Additional deputy commissioner for the state acts as the district grievance redressal officer. Slightly good point to remember. For Department of Food Supplies, Civil Supplies and Consumer Affairs has successfully implemented one nation, one ration card scheme. Very important scheme. Which is aimed for the benefit of migrants who have to frequently change their place of residence for employment purposes. इससे जो माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहने लगते हैं, वो लोग भी अपने लिए खाने के लिए दे कैन अटेन थ्रू दिस स्कीम. उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो एक जगह से दूसरे चले गए तो वहां उनका रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता. एक ही राशन कार्ड से वो कहीं पे भी बाय कर सकते हैं अपनी एंटाइटलमेंट. नेक्स्ट वी हैव द डेमोग्राफिक. So for the demographic, we have observed that the population growth rates have slowed down in Punjab, declining birth rates and fertility. 2018 में fertility rate for India is 2.8 and for Punjab is 1.6. 2.1 is considered as the replacement fertility rate. Punjab has the adverse sex ratio, which has improved significantly during the decade between 2005 to 7 and 16 to 17. 10 साल के पीरियड में it has improved significantly. It rose from 837 होता था 2005 में, 2016 में 890 हो गया. So they're working well. National sex ratio has declined on the other hand. वो 901 होता था, अब 898 है. सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का डिक्लाइन है, बट 2 पॉइंट्स का डिक्लाइन भी एट अ नेशनल लेवल मीन्स ह्यूज. Improvement in both rural and urban areas, with urban Punjab performing better than rural Punjab in this category. Next, migration. पंजाब में हाई इन माइग्रेशन है फ्रॉम अदर स्टेट्स, और ये इंडिया के टोटल 5.3% माइग्रेंट्स को केटर करता है. एंड एज पर द शेयर 8th लार्जेस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स है. ठीक है. मेजॉरिटी 55.2% आर फीमेल्स, और मैक्सिमम गो टू लुधियाना या मोहाली. ठीक है. यूपी से मैक्सिमम माइग्रेशन हो रहा है. ठीक है. ऑलमोस्ट 26% ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू पंजाब आर कमिंग फ्रॉम यूपी. और हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे पंजाब के जवान जो बाहर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं पता ही हमें? कनाडा, यूएसए, ये वाली कंट्रीज में हमारा आउट माइग्रेशन है. नेक्स्ट वी हैव लेबर फोर्स. So the labor force participation rate in Punjab has witnessed a 1 percentage point growth during the same period as the nation witnessed a 0.4 to 0.5 percentage growth. More importantly, the trend is important that labor force participation rate has grown slightly. Punjab has experienced an increase in labor force participation and worker population ratio, while at all India level there is a decline since 2015 to 16. There has been a district bureau of employment and enterprises set up by the state government, and ये established हुआ है 2018 November. Next we have certain schemes that are given in the first chapter. एक old age pension scheme है. ये ज्यादा important इसलिए है क्योंकि ये scheme specifically हमें बताती है कि 10.3% old age population है हमारे पास. फिर एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन. ठीक है. ये 1995 में स्टार्ट हुई थी. 60 ईयर के और से बड़े इनके एप्लीकेंट्स होने चाहिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे ही होने चाहिए. लेस इंपॉर्टेंट. सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस. ये कब सेलिब्रेट होता है? 1st of October एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस. ठीक है. इन परसुएंस ऑफ UNGA रेजोल्यूशन, और कुछ एल्डर लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है. दिस इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कीम्स पॉइंट ऑफ व्यू. हम आगे जाके इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी करेंगे. पंजाब फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एसिड स्कीम, इसमें 8,000 पर मंथ दिया जाता है. ठीक है.
और इसमें 24 lakhs ईयर मार्क किया गया, तो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट पर मंथ 8,000 दिया जा रहा है. नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, in 2010. It relates to bringing of existing 15 homes under Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2000 and Children Protection Programs under one umbrella. So basically unification हो रहा है. Right of Person with Disability Act 2016, ठीक है, it is being implemented. इसके अंदर दो कमिटीज भी हैं, एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है. इसमें स्टूडेंट्स अप टू 8th स्टैंडर्ड गेट 200 rupees per month and above 9th standard they get a scholarship of 300 per month for their studies. ये इंपॉर्टेंट है. रीजनल फाइनल इंजरी सेंटर मोहाली में है या बन रहा है. 3rd December is celebrated as International Day of Disabled Person, less important. Scheme for Rights of Person with Disability Act 2016. So ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि सिब्डा जो एक्ट है वो 2016 में आई थी. It is basically to extend maximum possible help and to create a barrier-free public use through transportation, buildings and places for people with disability. उसके बाद माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट है, वो SAS नगर में है. सिमिलरली महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट है, वो भी SAS नगर में है. Sardar Bahadur Amin Chand Soni Armed Forces Preparatory Institute is at Bajwara village in Hoshiarpur. So this is at a different place. Then we have Ghar Ghar Rozgar Yojana, under which it is a special program by the state government to provide employment to unemployed youth through mega placement drives या job मेला लगाते हैं basically, ठीक है. Next we have अपनी गड्डी अपना रोजगार योजना to provide self-employment and entrepreneurial avenues to youth of Punjab in transport sector, ठीक है. It was launched by the state government. Taxis provided at subsidized rate and no collaterals are required for loan for purchasing of taxis. So basically this is the first chapter. If you have any doubts, any concerns, please let us know in the comments, and we'll be covering the further chapters in the coming lectures in the videos. So please stay